Okay, last हमने इंशाल्लाह start किया था chapter radioactivity. We'll continue with that. We'll complete that and then we'll start from the first chapter. So we continue with radioactivity. इसमें हम न्यूक्लियर कंप्लीट करेंगे और एक क्वार्क थ्योरी है वो हम कंप्लीट करेंगे and then we'll start with the first chapter, which is measurements and errors. So what is nuclear mutation? Generally what we do is हम किसी भी एलिमेंट को जब हम in terms of its values identify करते हैं तो we identify that with two numbers. एक उसका mass number जो ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है that is called a mass number और जो नीचे नंबर लिखा होता है that is called the atomic number. Now what does these terms means? When we say mass number it means न्यूक्लियॉन नंबर यानी कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं. न्यूक्लियॉन नंबर और mass number is A, whereas atomic number is the number of protons. How many protons the element consists of. So ये दो numbers के साथ हम element को identify करते हैं in periodic tables. So if I say A, the number of nucleons means number of protons plus number of neutrons. P stands for proton and N stands for neutrons. So mass number is the total number of protons and neutrons. Z is number of protons and similar number of electrons are revolving around the nucleus. जितने protons होते हैं we have same number of electrons, they are revolving around the nucleus. If I ask you to find the value of neutrons, neutrons कितने होंगे? For that simply subtract A minus Z. Mass number minus atomic number will give you the value of number of neutrons. ये calculations आपको आने चाहिए कि अगर आपको मैं इसकी नोटेशन दे रहा हूं एलिमेंट की तो आपने मुझे बताना है प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स एंड व्हाट इज द मास नंबर, बिकॉज लेटर ऑन वी आर गोइंग टू यूज दीज वैल्यूज टू फाइंड द मास ऑफ द एटम और फाइंड द चार्ज ऑफ द एटम. So if I have radium 226 and 88, what is the mass number? What is the atomic number? The mass number is 266 and atomic number is 88. Right. What is the number of protons? Sir, 88. What is the number of electrons? 88. So protons and electrons will be same because it's a neutral atom. So whatever is the number of protons, उतने ही neutrons भी होंगे. Okay, so this is how we find the number of protons and electrons. What about neutrons? कितने neutron होंगे? The neutron number is, I think, mass number minus proton number. बिल्कुल ऐसे ही होगा. That is A minus Z. 226 minus 88. So we get the answer as 138 in this case. So this is how we describe nuclear notation, mass number, atomic number. और अगर किसी भी एलिमेंट का mass और atomic number आपको दे दिया जाए तो वो आपसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स पूछ सकता है. अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन डेफिनेशन आती है, वो है आइसोटोप. एक ही एलिमेंट है, we have different isotopes. What does the term isotope means? There are elements with same number of protons and electrons, but it a different number of neutrons. It is an element, same element, it has same number of protons and different number of neutrons. That is, it has a different number of mass number. We have elements जिनका के mass number same होता है मगर वो same element नहीं होते. Same element are those which have same number of protons, but they may have different number of neutrons. इसलिए उनका mass difference जो है वो different हो जाता है और as a result of that we call them isotopes. Most common isotopes are hydrogen,
हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स के वी हैव डिफरेंट isotopes. We have isotopes have same number of protons. अच्छा, ये isotopes नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं and we can make them artificially as well. They are called artificial isotopes. We can artificially create it, और उनको हम आमतौर जब क्रिएट करते हैं they are basically radioactive materials as well. यानी जब आप आर्टिफिशियल क्रिएट करेंगे तो वो एलिमेंट एज इट इज रेडियोएक्टिव भी बन जाता है. सो आइसोटोप्स आर दोस which have same number of protons but different number of neutrons. अब हम यही नोटेशन को यूज करेंगे टू डिस्क्राइब डिके. जब हम बात करते हैं अल्फा डिके की, व्हाट हैपेंस, वी हैव सेम नंबर ऑफ, जब अल्फा जब डिके करेगा उसमें से हीलियम जो है वो एमिट हो जाएगा. हीलियम एमिट होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स थे वो रिमूव हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी विल गेट अ न्यू एलिमेंट. बिकॉज जब आपका मास नंबर भी चेंज हो रहा है और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है तो नतीजा क्या होगा कि यू विल गेट अ न्यू एलिमेंट. इस केस में जो ओरिजिनल एटम होता है उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो नया एलिमेंट क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दैट डिके इट इज कॉल्ड अ डॉटर न्यूक्लिया. क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यू हैव टू बैलेंस द वैल्यूज. दे विल आस्क यू व्हाट इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यू एलिमेंट. तो जब भी हीलियम या अल्फा डिके करेगा, हाउ टू फाइंड द न्यू एलिमेंट, आपने जो पेरेंट न्यूक्लियाई था यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 बिकॉज अल्फा हैज 4 mass number. You subtract 4 from A and you subtract 2 from Z, you will get the mass number and atomic number of the new element. ये आपको बैलेंस करना आना चाहिए. वो इसी में से कोई ना कोई चीज जो है वो आपसे पूछेगा, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हीलियम जो है उसका mass number या atomic number क्या है, and he may ask you what is the mass number or atomic number of the new element. Always जो आपके mass number है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड का बैलेंस होगा, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड और राइट साइड का एटॉमिक नंबर भी बैलेंस होगा. अगर आप ऐड करेंगे तो Z minus 2 plus 2 is Z. Similarly A minus 4 plus 4 करेंगे तो यही आ रहा है ना आंसर. इक्वेशन में भी ये बैलेंस होना चाहिए हमेशा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यूरेनियम 238 92, ये कन्वर्ट हो रहा है और एक नया एलिमेंट बन रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यू एलिमेंट. पहले इक्वेशन लिखिएगा. डोंट हैव टू मेंशन द नेम्स. आपको याद करने की जरूरत नहीं है नया एलिमेंट क्या बनेगा, वो हमेशा आपको देगा. ये आपका जो है मास नंबर, ये एलिमेंट का नाम है. यू डोंट हैव टू मेमोराइज द नेम्स. वो नेम इक्वेशन में लिख के देगा आपको. जैसे मैं आई डू दैट ऑन बोर्ड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. मैं ये बोर्ड पे लिख रहा हूं. आई गिव यू 2 or 3 एग्जांपल्स एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर्स एंड देन वी विल कंफर्म द आंसर लेटर ऑन. ठीक है, जस्ट 1 सेकंड. अब मैं बोर्ड पे आपको इक्वेशन दे रहा हूं, आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है. We have uranium 238 92. इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है and we are getting a new element and the name of that new element is TH. अब ये TH आपको याद करने की जरूरत नहीं है. प्लस गैमा, आपने मुझे बताना है कि ये A और Z क्या है और X और Y की क्या वैल्यू होगी. गैमा इज अ रेडिएशन. Then we have thorium, ये भी कोई आइसोटोप है. 230 90, and here also we are getting alpha 42, and we are getting a new element which is radium. आपने इसका भी A और Z बताना है. Then we have radium 234 92,
इसमें से भी हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो एमिट हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग अ न्यू एलिमेंट। इसका भी आपने ए और जेड बताना है, प्लस वी हैव गैमा, इसका भी आपने एक्स और वाई बताना है। तो दीज आर द इक्वेशंस दैट वी हैव चलो किया है। चलो, एंड देयर इज अनदर रिएक्शन, इसमें भी अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, और नया एलिमेंट जो बन रहा है वो यूरेनियम 238 92 है। इसमें आपने बताना है कि व्हाट इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियर। क्लियर? ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। 238 है, ये आपका दोनों जीरो होंगे, बिकॉज गैमा जो रेज है दे हैव जीरो मास नंबर एंड जीरो एटॉमिक नंबर, ये आपने याद रखना है। फॉर thorium it will be 238 minus 4, and for Z it will be 92 minus 2, that means it will 234 90, ठीक है, 234 and 90, clear? Okay, let me see, 234 correct. Okay, for second it will be 226 and 88. Check your answers. Okay, for third, it will be 230, 90. Okay, what about fourth? Yeah, will be 242 or 94. यहाँ पे A will be equal to 238 plus 4 is 242, और Z की वैल्यू हो जाएगी 92 plus 2 is equal to 94. क्लियर? जो ऑनलाइन है समझाइए आपको, ये इस तरह की इक्वेशन वो देगा, एंड एग्जामिनर विल आस्क यू टू बैलेंस द इक्वेशन और फाइंड द वैल्यूज व्हिच आर मिसिंग इन द इक्वेशन. This is how we get alpha decay. Okay, now see what happens when we have a beta decay. In case of beta negative decay, there are two types of decay, beta negative and beta positive. Beta negative means that we will get an electron. So when we have beta negative decay, in that case, what happens? A neutron is converted into a proton and electron. Okay? Neutron is converted into an electron and proton. अब नोट कीजिएगा, यहां मैंने तीसरी चीज भी लिखी है, V लिख के उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. इंटरेस्टिंगली ओ लेवल्स में इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता. But a third particle is emitted. जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन साथ में एमिट होगा, और एक तीसरा पार्टिकल एमिट होता है, एंड दैट थर्ड पार्टिकल इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो. यहां पे अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे ए लेवल्स में, तो यू विल गेट 0 मार्क्स. तो यहां पे क्या है? A neutron is converted into electron, which we call as beta particle. We have a proton, and the third particle is called anti-neutrino. ये नाम है इस पार्टिकल का. इसका मास नंबर भी 0 होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 0 होता है, एंड इट इज नॉट गैमा रेज. गैमा रेज में ही होता है. गैमा रे का सिंबल मैंने पहले दिखाया आपको बोर्ड के ऊपर, इट्स अ डिफरेंट सिंबल. इसमें हमने स्मॉल v लिख के उसको अंडरलाइन करना. दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो. सो एंटी न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होगा, और अगर उस रिएक्शन में गैमा रेज प्रोड्यूस हो रही है तो गैमा रेज प्रोड्यूस होगी. बट यू हैव टू मेंशन दैट दिस थर्ड पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो इज आल्सो प्रोड्यूस्ड whenever we have a beta negative decay. Negative decay means electron produce हो रहा है. And what happens to the element?
अगर हमारा mass number A Z है parent का, 0 minus 1 is representing beta. The new element Y have the same mass number, but atomic number is increased by 1. Why? Because एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन इंक्रीज कर गया, इसलिए Y के एलिमेंट जो नया बन रहा है, it will have Z plus 1. Simply add 1 and we have anti neutrino V dash. ये मेंशन करना है. अगर वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है कि इसका मैच नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप 0 लिख देंगे. अदरवाइज जस्ट V dash लिख दें और नीचे लिख दें एंटी न्यूट्रिनो. दैट इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब दिस पार्टिकल. तो दिस पार्टिकल हैज टू बी मेंशन. अगर नहीं करेंगे तो चाहे आपने मैच नंबर एटॉमिक नंबर सही लिखा हुआ है Y का, यू विल स्टिल गेट 0 बिकॉज यू हैव नॉट मेंशन द थर्ड पार्टिकल. ओ लेवल्स में हम नहीं करते थे, मगर यहां आप उसको मेंशन करेंगे. Okay, let's see. Sodium. We have 2411. Beta particle emit हो रहा है. What is the mass number, atomic number of the new particle? I just do it on the board as well. क्वेश्चन पहले लिखे थे, मैं दोबारा क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फिर आप इसके आंसर लिखेगा and then we'll confirm the answers. Okay, sodium है मेरे पास. Sodium is 2411. We get magnesium. What is X and Y? Plus, what else is produced? Plus gamma rays. Then we have another element, thorium. It is converted into new element. It is Pa. What is X and Y? And we have something produced. What is A and B of this element? And we don't have gamma. Upon the gamma भी लिख चले. Plus gamma. उसका भी आपने C भी निकालना है. Then we have Pa, which is 23491. इसमें से भी बीटा निकल रहा है. And we have a new element formed, which is uranium. Plus gamma. And then we have another element lead. इसमें से भी बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं. And we have a new element formed, bismuth. 21483. So write down the missing values. तो ये आपका 24 ही रहेगा और ये 11 plus 1 12 हो जाएगा. It is not 10. It is 11 plus 1 12. And anti-neutrino V dash 00. 234. 91. 00. And here also we have 00. Add 1. Which was 70 किसकी कह रहे हैं?
11 11 ये 11 था, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। ओके, 234 92 एंटी न्यूट्रिनो 00 214 same value and this will be 82. Here we have anti neutrino 00, ये भी 00 ही रहेगा। क्लियर? हाँ जी, बाकी बेटा बाकी लोग जो है आप, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब बीटा नेगेटिव डिके, और इसके अंदर क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए +1 कर दिया था मैंने। अब हमारे पास आता है बीटा नेगेटिव डिके, पॉजिटिव डिके। व्हाट हैपेंस हियर? In case of beta positive decay, we have a proton converted into neutron. It's a different process. पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, now it is a proton that is converted into neutron. वहां पे जो तीसरा पार्टिकल निकल रहा था वो एंटी न्यूट्रिनो था। यहां पे जो पार्टिकल निकल रहा होता है इसको न्यूट्रिनो कहते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है, वहां पे एंटी न्यूट्रिनो था, दिस वाज एन इलेक्ट्रॉन, नाउ दिस वन इज कॉल्ड अ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या चीज होती है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज, इट हैज द सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। इस केस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। पहले हम ये डिके जो है डिस्कस नहीं करते थे, बिकॉज ओ लेवल में नहीं करते, यहां पे आके आपको पॉजिटिव बीटा डिके भी जो है वो भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड नाउ हियर वी हैव अ प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, इट्स नॉट अ प्रोटॉन, इट इज अ पॉजिट्रॉन, एंड पॉजिट्रॉन इज नॉट प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। ये जरा इसको एम्फसाइज कर लीजिएगा so that you understand। कई बार कंफ्यूज होता है बंदा कि ये प्रोटॉन तो नहीं है, इट इज नॉट प्रोटॉन, इट इज एन इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा? what happens in this case? we have a proton converted into neutron, so एक प्रोटॉन कम हो रहा है, तो नतीजा क्या होगा कि मास नंबर तो वही रहेगा मगर एटॉमिक नंबर जो है वो Z-1 करेंगे, एक वैल्यू माइनस कर दो। अगर 92 था तो 91 कर दो, डिक्रीज बाय 1। बीटा नेगेटिव में Z+1 था, बीटा पॉजिटिव में Z-1, यानी जो मास नंबर है उसमें से आप 1 माइनस करें। तो ये डिफरेंस है बिटवीन बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बन, ये पॉजिटिव डिके कर रहा है, वो खुद बताएगा आपको कि बीटा नेगेटिव हो रहा है या बीटा पॉजिटिव हो रहा है, वो कोई उसकी हिंट देगा। अब इसमें क्या होगा, जो नया एलिमेंट बनेगा उसका मास नंबर 11 ही रहेगा मगर एटॉमिक नंबर 6 - 1 5 बन जाए और इसके साथ निकलेगा न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो था, बीटा पॉजिटिव में इट इज न्यूट्रिनो, इसका नाम है न्यूट्रिनो। सिंबल बनाएंगे आप वहां पे, या एटलीस्ट राइट डाउन दैट दिस इज अ न्यूट्रिनो। अगेन इट हैज अ मास नंबर भी 0 होगा और एटॉमिक नंबर भी 0। इसमें जो एनर्जी लिखा हुआ है 10, ये हर इक्वेशन में होती है। हाँ, नहीं वो इक्वेशन खुद देगा, अच्छा, नॉट नॉट कंपल्सरी। कई केसेस में वो आपका जो है वो गैमा रेज होती है, अगर वो मेंशन करेगा तो आपने करनी है, वरना आप और एनर्जी में कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एनर्जी का से कोई ताल्लुक नहीं है। एनर्जी बेसिकली इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज और इट कैन बी सिंपली काइनेटिक एनर्जी। यानी जब पार्टिकल डिके करता है तो उसमें से गैमा रेज निकलती है, उसको भी एनर्जी कहेंगे, ठीक है। मगर समटाइम्स द पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, तो ये उस काइनेटिक एनर्जी को रेफर करता है कि पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी।
तो ये एज इट इज कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई किसी भी चीज से ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ ताल्लुक इस चीज से है कि दे मे पोजेस काइनेटिक एनर्जी व्हेन दिस डिके टेक्स प्लेस, यानी कि जो पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं दे विल बी मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, अनदर एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन है मेरे पास 15.8, दैट इज द इक्वेशन। देखिए इसके आगे आप यू कैन कॉल इट एनीथिंग, बल्कि मैं बोर्ड पे लिख देता हूं उसके चले, लेट मी जस्ट राइट डाउन द बोर्ड as well, just 1 second. We have oxygen 15.8, इसमें से बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है and we are getting a new element N, plus you have to mention what is emitted here. आपने ये बताना है x और y क्या है। Okay, another example I write on the board. एक एलिमेंट है x, we do not know its values but we know that it is beta positive decay. The new element that is being formed is Ne, और इसकी वैल्यू दी हुई है 2210 plus a third particle is being emitted. That is your equations. Then we have another element N, इसमें से भी बीटा पॉजिटिव हो रहा है and it is converted into carbon 12 and 6, and we have a third particle also emitted here. Complete the equation. First equation, ये 15 ही होगा, और 8 से क्या हो जाएगा, 8 minus 1, because it is beta positive, and 0 0 neutrino. Third equation, if this is 22, this is 22, ये क्या होगा, 11 minus 1 करेंगे तो 10 बनता है, and the third particle is 0 0. Here ये 12 ही होगा, and this will be, हाँ जी क्या होगा, this was 2. सॉरी इसमें जोड़ना है 7, ये बीटा पॉजिटिव है, 7 होगा करेक्ट, और ये होगा न्यूट्रिनो 0 0. So this is how we describe beta positive and beta negative decay. इसको जरा दिमाग में क्लैरिफाई कीजिएगा, because ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं, these are the actual questions that are being asked. ये जरा इक्वेशन लिख लीजिएगा, ये भी एक रिएक्शन है जो एक टेक्स प्लेस, कोई भी रिएक्शन फॉर दैट मैटर. I am giving you a fission reaction. I write down the board as well. We copy कीजिए, पहले इक्वेशन लिखिएगा जो मैंने रिएक्शन दिया हुआ है फिशन का. We have uranium 23592. Uranium 23592, इसमें ऐड हो रहा है एक न्यूट्रॉन, और it is broken up into two smaller nuclei, barium 140 156 plus another small nuclei, krypton Kr 92 and Z. ये हमें नहीं पता क्या चीज है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, प्लस x नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्लस एनर्जी. अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, जिस तरह हमने अल्फा बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव किया था, उसी तरह का ये रिएक्शन है. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी रिएक्शन होगा उसमें 3 चीजें कंजर्व होंगी. ये पहले लिख लीजिएगा नीचे, फिर हम बाद में इनको कैलकुलेट करेंगे.